ये एक्टीमीटर है, इसको हम साइड से ऑन करेंगे। इसमें दो तरह के हैं, ये ऊपर वाला एक्टीमीटर है और नीचे जो है वो ओपन फील्ड। यहाँ हम इसके F1 में जाएंगे सेटिंग में, F4 में जाके आप एनिमल जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, F3 से सिंगल एनिमल और सेवरल एनिमल्स। सिमिलरली आप फिर F4 में जाएंगे, अपर में रीडिंग और होल्ड और एंड एक्टीमीटर तीन तरह टेस्ट कर सकते हैं। F4 में जाएंगे, लोअर में की सेटिंग में जाएंगे, होल्ड और एक्टीमीटर या रीडिंग। लोअर में अपर में हमने एक्टीमीटर सेट करना है, लोअर में रीडिंग। ठीक है, एंटर करेंगे, F1 से एस्केप एंटर कर देते हैं इसे, फिर F3 में और ओके एंटर F1 में जाके दोबारा फिर डेट है आज, डाटा जो है वो जितने भी एनिमल्स आपने स्टोर किए हैं वो जाएगा और इसको एस्केप कर देंगे F1 से, टेस्ट F3 में जाके टेस्ट लोअर Y मोड में ये देखें अपर आ रहा है, लोअर आ रहा है। वाई में हम अपर कर रहे हैं और इसको एस्केप कर देते हैं, तो टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं और इसमें हम एनिमल डाल देंगे 5 मिनट्स तक इसमें टिक रहेगा। S R stands for slow reading और F for fast reading।